हाय सोवी। अच्छा, आज ना थोड़ा एनर्जी कम है, बट काम उतना ही करना है, राइट? हाय सुहानी। हाय कंडियाना। हाय विरोश। न्यासा, आई एम 6 years old. Oh, you are doing it with your mama. Okay, just wait. We will wait for like 2 minutes as always, and then we will start. And for tomorrow, just make sure I have a work tomorrow around 6 o'clock. So tomorrow we will be, instead of 5:30, we will be live on 5 o'clock. So just make sure you guys be ready around 5 o'clock instead of 5:30 for tomorrow. सिर्फ कल के लिए 5 बजे है, बाकी सारे टाइम वी विल बी लाइव ओनली ऑन 5:30. ठीक है, सब आ रहा है? हाय श्वेता। ओके, आई थिंक सब आ रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. अच्छा, हाउ मेनी पीपल नो के पेपा पिग की फैमिली में कितने लोग हैं? कैन यू सी इट? हाय वेम्पायरी 991. I was a vampire fan very long back. I used to watch each and every vampire movie. अच्छा बताओ, how it is? I know, it was so stupid. Not stupid, but it was funny that I was a vampire fan once. अच्छा बताओ, how this will be? So we will be doing Peppa Pig today, and then if we have time, we can also do the Peppa Pig family. I know. So फर्स्ट वी विल फिनिश पेपा पिट, क्योंकि एक ही शेप है एंड डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट वेरिएशन है. सो वी विल बी डूइंग पेपा पिट फर्स्ट, एंड अगर टाइम मिलेगा देन वी विल स्टार्ट विद द फैमिली एज वेल. For this you just need, as I said yesterday as well, pencil, eraser, sharpener, that's it. And अगर चाहिए है for coloring, as you can see, without color bhi na, it look very nice. But if you wanted to color, you can use any of the sparkle pen, any of the acrylic paint, or the soft pastel, or the or the oil pastel, or the watercolor. Anything is fine. And I bought a lot of supplies today because यहाँ पे थोड़ा सा shops open थे. So I bought few art supply कि भाई दोबारा लॉकडाउन होने से पहले ले लो, पता नहीं थी नेक्स्ट क्या होने वाला है. So it depends. If we have time, we will paint it as well. But we have a choice of material today, so you need to tell me which color you want me to paint it. But before starting, give me 2 minutes. Meanwhile, you need paper, you need eraser, you need pencil, sharpener. That's it. Just bring the basic supply and one pen if you want, but that is optional. You just need a pencil, eraser, paper. That's it. So bring all the material. Meanwhile, I just change the camera angle. Sure. And I'll be taking questions if you have any doubt, if you want me to do anything specific.
I'll take the questions once I finish the drawing. Neha sent 1504 send me a video request. Let's see what she wants to say. Unable to join. I don't know what happened. Okay, give me a second. Let me just make it a stable and then we can start. Okay, I think it's visible enough. And if you see a little shadow or anything, don't worry about that. Everything I'll explain in a very simple way and step by step. And even if you are doing with like 6-year-old or 4-year-old, they will be able to follow. Let's see what Palash 789 wants to say. I just take that one quickly. They might not be able to see my face, but okay, she declined the thing. Neha still send me a request. Let's see if she can join. Neha, you need to accept the video request, then only you can join on a video. Meanwhile, hello. Oh, okay. Acha, tell me what is missing in this drawing. You can take a reference of this one and tell me what is missing in this drawing. There's only one thing which is missing. Tell me what it is. क्या missing है इसमें? And on Facebook, let me go a little closer. That is fine. Yep. Yes. So just the tail is missing. Chalo. Ready with the material? Give me a thumbs up if you are ready with the material so that we can start. Give me a thumbs up if you are ready with the material, and then we will start, and it will take not much time today so that we can also do the painting. Done? Colors to nahi kiye na, because color are not compulsory. You can also do something like this if you don't have colors. Peppa Pig, Daddy Pig, Mama Pig, and this is her brother. His or her? Her, I think. Done. Ready. Now. चल जो भी स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेज के ऊपर से. लाइक हाफ ऑफ द पेज विल बी फेस ऑफ द पेपर पे एंड रेस्ट ऑफ द हाफ विल बी बॉडी. ठीक है, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेज से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल सी. एंड इफ यू आई कैन शो यू वन picture of Peppa Pig that will be easy for me to explain it. अच्छा स्टॉप हो गया है. ओके, ये वाला जो पोर्शन है ना पेपा पिग का, दैट इज ऑलमोस्ट अ सर्कल शेप. ठीक है, ये ऑलमोस्ट सर्कल है. दिस विल बी अ कोन. वो बनाते ना जैसे बर्थडे का टोपी बनाते हैं, सो दैट विल बी योर कोन शेप.
these two shapes are very important कि कैसे बनाना है. If you are comfortable with the freehand drawing, that is good. Otherwise क्या कर सकते हैं? Take any of the certain thing and make a circle. ठीक है. अगर कंफर्टेबल नहीं है फ्री हैंड ड्राइंग के तो यूज एनी राउंड थिंग एंड मेक अ सर्कल. डोंट यूज कंपास क्योंकि कंपास ना फिर सेंटर पे होल्ड कर देगा. सो डोंट यूज कंपास. यूज एनी ऑफ द सर्टेन थिंग, any of the circle and make a round. And round भी proper round नहीं चाहिए, almost round चाहिए. So I am just making a circle for the head. And if you want, you can keep on moving your page. And because we are using pencil, you can like erase it as many times as you want, but use right hand of pencil. नहीं तो क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट क्वार्टर हिस्सा मैंने छोड़ा हुआ है. ऑलमोस्ट वन फोर्थ ऑफ द. Are you done with the circle? Okay. Once you done with the circle, almost circle, then what you need to do is इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाना है. क्या है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बढ़ानी है, थोड़ा सा कर्व देना है. ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे. एंड जितना कर्व ऊपर है उस पर ऑलमोस्ट बराबर कर्व थोड़ा यहाँ पे आगे के साइड पे. सो दिस विल बी द पेपा पिग नोज. ठीक है. अभी अगर इस वाली ड्राइंग को देखते हैं ना तो उसका नोज भी है, राइट. तो नोज कहाँ पे बनेगा? एट द एंड ऑफ दिस कोन. तो जरूरी नहीं है, अगर थोड़ा लंबा कोन बना दिया है, यू जस्ट सी कि कहाँ पे आपको फिट लग रहा है उसका नोज. नहीं है, थोड़ा पास में बना दो, बट जितना भी साइज यहाँ से सेंटर से और ये वाला है ना, इसे थोड़ा सा छोटा साइज लेके अपना नोज बना देना है. एंड जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसको रफ कर दिया. ठीक है. अभी नोज में सांस भी तो चाहिए उसको. ब्रीथ कैसे करेगा? हाउ शी विल ब्रीथ? सो दीज टू होल्स शुड बी देयर. तो ऑलमोस्ट सेंटर से थोड़ा सा ऊपर 2 सर्किल विजिबल. ठीक है. एंड अगर इफ यू मिस्ड एनी ऑफ द स्टेप, डोंट वरी, वंस आई फिनिश द ड्रॉइंग आई अगेन एक्सप्लेन इट. ठीक है. तो फर्स्ट हमने सर्किल बनाया. सर्किल बनाने के बाद वी जस्ट ड्रॉ लाइक थोड़ा आगे बढ़ा के कोन शेप बना के एंड एक ओवन बना दिया. एंड ओवन विल बी द नोज एंड नोज के अंदर 2 नॉस्ट्रिल. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ द फेस. नाउ 2 आंखें चाहिए. एंड व्हेन आई वाज वाचिंग दिस
कार्टून का फेस ना, आई वॉज जस्ट सर्चिंग कि कौन सा वाला एंजिन बेटर है. आई डोंट नो इफ यू इफ यू कैन लाइक मेक इट. ये वन साइड है ना, वो साइड से खड़ी हुई है, एंड वन साइड पे उसके दोनों आते हैं. आई डोंट नो हाउ बट इट लुक वेरी नाइस. सो लेट्स सी. सो जस्ट नीड टू सर्किट. आईज हो जाएंगी. दो सर्किट फॉर आईज. ठीक है. एंड इफ यू वांट हर टू लुक दिस साइड, जो आई बॉन्स है वो थोड़ा इस साइड को बना देंगे. अगर इफ यू वांट हर टू लुक दैट साइड, जो आई बॉल्स है वो इसके पास में बना देंगे. इफ यू वांट हर टू लुक डाउन, तो थोड़ा नीचे बना देंगे. इट डिपेंड्स वेयर यू वांट इट टू हर टू लुक. तो उस साइड पे आईज जाएंगे. नाउ ऑलरेडी आई हैव अ पिक्चर ऑफ her looking this side, so now I want her to look that side. ठीक है. अभी नेक्स्ट आएगा, एंड आई एम यूजिंग वेरी लाइट pencil because I just wanted to finish the drawing, and once it's finished then again I make the darker shade of pencil. What to do is you need to make a cheek. जो ब्लश करते टाइम चीक होता है, यू नीड अ चीक. तो जो भी आई बॉल है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा सर्किल बनाना है आई बॉल के नीचे, टू शो हर चिक बोन. And then you need half circle for smile. Only ear is left. If you can see here, the basic drawing of the face is done. Now we need to make the ear. For ear, कान बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बस कान बना देने हैं. Have you finished the face? Once you finish the face, let me know. Then only we will move for the body. Once you are finished with the face, let me know. And done with the face. Okay, nice. Acha, for body, because she's, so to make her dress, what we need is, जितना उसका बॉडी फेस का साइज है, ठीक है, उसका ऑलमोस्ट साइज लेके थोड़ा उसके नीचे, लाइक इतना फेस है, इतने ही उसका फ्रॉक का साइज लिया, थोड़ा नीचे है, क्योंकि फेस कभी भी बॉडी के बराबर नहीं होता, फेस हमेशा छोटा होता है. तो जस्ट चेक द साइज ऑफ द फेस अप्रोक्सीमेटली. स्टेन का जरूरत नहीं है, हाथ से ही मेजर कर सकते हैं. देखा इतना साइज है, इधर आए, अच्छा इतना साइज फेस का आ रहा है, थोड़ा सा नीचे, जस्ट मेक अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जितना फेस है उतना मेजर करके थोड़ा सा नीचे आती है, उसका एक स्ट्रेट लाइन बना दिया.
ठीक है। अभी वंस वो स्ट्रेट लाइन बन जाए, जस्ट सी कि उसका जो फेस है उसके जस्ट नीचे आके थोड़ा साइड में जाके, जितना इधर साइड में रहे उतना ही इधर में साइड में जाके 2 पॉइंट बना देने हैं। 1 पॉइंट इज दिस, 1 पॉइंट इज दिस। क्या है ना, थोड़ा अम्ब्रेला शेप का ड्रेस है उसका। इफ यू सी, थोड़ा सा तिरछा जाता है ये, इवन हियर। अच्छा, यहाँ पे ना बारिश होने वाली है, तो बहुत बादल है एंड अंधेरा होने वाला है। इफ आई फील लाइक कि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया, एंड स्विच ऑन द लाइट। अभी क्या करना है, उसका जो चीट है, चीट के ऑलमोस्ट नीचे से आके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलाते हैं, एंड सेम फॉर द अदर साइड। एंड इसमें देख लेना कि ये जहां से मिला रहे हैं उसी के ऑलमोस्ट हाइट से दूसरा वाला भी मिलेगा। ठीक है। बट इफ यू फील कि यार ये बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया है, तो बिकॉज वी आर यूजिंग लाइट पेंसिल, you can always reduce it, and if you want you can always move your paper pencil. It's not like ये एक जगह है तो फिक्स ही हो गया है। It's make sure you keep on removing those. Body is done, face is done, body is done. What is next? ठीक है। So body is easy, it's very easy। umbrella टाइप का शेप बनाना है, जस्ट देख लेना कि फेस के जस्ट नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज उसके हाथ। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, ऑलमोस्ट हाफ देख लो कि कहाँ पे आ रहा है, हाफ से थोड़ा ऊपर लेके मेक अ लाइन, एंड ये जैसे हमारे यहाँ त्रिशूल या ट्राइंगल होता है ना, वैसे ही कुछ बना है। एंड सेम गोज फॉर हियर, दिस विल बी हर हैंड। ठीक है। फॉर फीट what you need to do is ऑलमोस्ट हाफ देख लो कि कहाँ पे जा रहा है, एंड वाई आई if you keep on using scale and compass and everything, इट इज इजी, बट फ्री हैंड ड्रॉइंग के लिए वो उतना फिर कंफर्टेबल नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं हो रहा, इसलिए डोंट यूज एनी स्केल। जस्ट सी ऑलमोस्ट सेंटर कहाँ पे आ रहा है इसका, एंड थोड़ा उसके जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतने डिस्टेंस यहाँ पे लेके उसके डेप्थ बनाते हैं अभी। तो जस्ट मेक अ वन लाइन, वन पैरेलल लाइन। डोंट मेक वेरी स्ट्रेट लाइन कि बिल्कुल सीधे सीधे पैर बना दिए, बिकॉज शी डोंट हैव अ वेरी स्ट्रेट नेक, नॉट अ ज्योमेट्रिकल काइंड ऑफ शेप, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, दैट इज गुड। एंड वंस यू आर डन विद दिस शेप, व्हाट यू नीड इज you need to make the foot। एंड जब फुट बना रहे हैं, मेक श्योर ये वाला जो हाइट है ना, ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। अगर ये थोड़ा लंबा है तो इसको छोटा बनाना है, बट अगर ये छोटा है तो इसको और भी छोटा बनाना है। तो विद दैट क्लोज अप सो दैट यू नो हाउ इट इज लुकिंग। So don't
don't worry about it. Okay. And for tail, what you need is you put your pencil on here, somewhere here at the bottom, not on the triangle, but somewhere on the bottom, and make a round, remove it, and then row it. Okay. So just in one go. That's it. Now, have you finished your drawing? Give me a thumbs up if you finished your drawing. Then I have a question. Okay, I think Insta पे काफी visible है, Facebook पे थोड़ा कम है. Let me just go and do a one close up for Facebook. Done. Them something. What you can do is you can make a Peppa Pig, then just cut it around the painting, and उनको bookmark बना सकते हैं, उनके बैक में लगा सकते हैं, laminate कर it. It's up to you how you wanted to use it. So done. Shruti, Mayuri, Harpreet, everyone is done. Anyone stuck somewhere? My voice is not clear. Check your internet connection, because I am checking it on other side. It's on right, I think. Done. Okay. Acha, abhi tell me what kind of paint you want me to use on it. You want me to use acrylic paint or the sparkle paint or any of these pastel, like fabric, like normal watercolor or the oil pastel or the soft pastel. Which one you want me to use? If you don't say anything, I would go with the sparkle pen, because those are the pen I wanted to use since very long. You can use any of the drawing material or colors sheet. It depends on you what you have. For if someone is wondering how it will look like a pastel, so this is how this will be for the pastel. यहाँ पे just one thing कि जब भी pastels use करने, make sure you have a eraser and just rub the rest of the area. Done. I'm not seeing any responses. Okay. So for face, if you see Peppa Pig, her face is cheetah, little darker pink. ये जो body है, it will be red. जो legs हैं, this will be the same color of the face, and this is the leg will be black. Then बाकी जो भी है वो outline black से हो जाएगा. So what we can do is, there are two things actually. You can paint it first and make the outline later on, or it depends on what medium you are using. If you are using any of the paint or the pastels or the oil pastel or the any crayons, if you are using something like those, paint it first, then make the outline. But if you are using some kind of pen, make the outline first and then do the painting. Let me just show you first. For one, let me just show you. If we have time, I'll also paint this one, but let me just start with this one. So what you need is, whenever you use any pen, as I always say,
just take a random just see. So this pen is not working properly, so I'm not going to use it. I can use it later on for some other thing. Let me just put it aside. Where is my oil pastel? So this is my oil pastel, and this is some different kind of oil pastel which I don't see in India. These are water soluble. Like I can paint it, and then later on I can use the water brush on it. Okay. So I need a very light shade of pink. So I use this one. But the thing is, this one is very dark for the face. If you see this face, and I make even with any of the dark of the pink color for the cheek, it will not be very visible. So let me just see if I have another lighter shade in other pattern. Okay, I have a lighter pink shade here. So I'll use this one for face and lips. So what you need to do is you just do as you use your pencil. So you need to just start rubbing from one end. Make sure you don't mix your area. Like eyes पे pink color नहीं जाना है. Just make sure you don't use it on eyes or on the cheek or on the frock or the dress. And also for tomorrow, I'll be there around 5 o'clock, not 5:30. So make sure you guys be online on around 5 o'clock, because I finish it before 6 o'clock tomorrow. So I don't want anyone to miss any of the session. So just make sure you guys be online and join me at 5 o'clock tomorrow. And if you are making anything with me or after watching the tutorials, what you need to do is you need to post your pictures and tag us at Hobby in a Box, or you can send me pictures at Hobby in a Box's page. So I'll ask one of the team member to post it on our stories. And if you have any question, if you stuck somewhere, don't worry, you can send me messages or questions on Hobby in a Box's page, and I see and I reply to all of those. I'll be a little busy till tomorrow, but day after tomorrow I'll take all the messages on Hobby in a Box page, and then I'll answer it. And same for the let. And थोड़ा ऊपर नीचे बाहर भी जाता है, don't worry, because we are going to use the black pen on it. Now what I use is I can use a blender, like वो जो pencil blender या crayons blender आता है, that I can use, but I know not everyone have those kind of tools, so I'm not going to use. You need to blend it with the tissue. ठीक है? And same for the face. And why we have blended it? Because ताकि कलर मार्क्स ना दिखाई दें, ये पूरा स्मूथ दिखना चाहिए. ठीक है? And that's the only reason we are blending the colors.
And don't worry if you join now. I just finished the like drawing and the coloring, and then I see the questions and comments, and I answer all the doubts you guys have. And once you are done, just remove the excess of the pastel with light hand. Don't press it too hard, just remove it with the light hand. For darker shade, for the cheek, I use a darker shade of pink. And then for the dress, just use the red color, any red color. If whatever color you have, like medium of color, acrylic, oil paint, or pastels, or crayons, or sketch pen, it depends on that. You just use what you have. No need to follow each and everything. Like you don't have to use the oil pastel. You just need to use what you have. Again, blend it. ठीक है, just blend it as much as you can, and edges पे थोड़ा सा careful रहना, don't mix everything. I'm just removing all the extra mark with the eraser. You can use any of the eraser, whatever is available to you. You can use it. You don't need any special kind of eraser right now. But if you want, you can buy a kneadable eraser for this. ठीक है, अभी भी थोड़ा weird लग रहा है ना, I know. Let me just close my pastel. Now, what you need is, you need a black pen or a marker pen. Any of the pen is fine. What you need to do is, you just need to make the outlines. You just need to make the outlines. Okay. And I am just showing you with the fine tip pen, but you can use a sketch pen as well. So just draw with small stroke and you will be fine. And जहाँ पे भी पेंसिल मार्क है ना, सारी जगह पे हमें मार्कर या फिर जेल पेन या फिर कोई भी पेन यूज करना है, just to make the outline. Let me just use this sketch pen so that I can finish it on time.
एंड इफ यू फील दैट नहीं अभी बराबर से ड्राइंग नहीं बन रहा है, यू कैन ऑलवेज मूव योर ड्राइंग बोर्ड. Just make all the outlines and it is going to finish. I keep on moving my paper so that it will be easy for me to draw. You can also do the same thing. So this is my Peppa Pig. You guys finished? Okay, anyone wants to show me their pictures if they have finished, send me a video. Let me just quickly scroll through the all the comments and then let's see if anyone. You can also use watercolor, you can use crayons, you can use any kind of colors, whatever is available to you. And that is the only reason yesterday also I said you just need a coloring object, like you can use any of the colors you have at home. Your name, my name is Rekha, and yeah, you can send me if you wanted to send me messages, you can send me messages on Hobby Nabobs's page. Okay, let me just scroll through the Insta comments. Anyone finished their drawing? Sure. Shruti, if you are on Instagram, from on Instagram, you can send me a video request there and show me now also. Meanwhile, I just scroll through the comments if I missed any of the questions or anything. Anyone finished and wants to show me now, you can send me a video request, because I don't know if you have finished or if you wanted to try it later on.
Okay, so I'll just quickly show you one more time this Peppa Pig which we made today. You can watch it the video later on Insta for 24 hours, on Facebook forever, and for you on YouTube you can make the speed according to you. If you wanted to slow down the video, you can do that. It's up to you. And if you finished your drawing later on, don't forget to send me pictures, because I'll be waiting for to see how you made. And for tomorrow, as you know, we made this paper board sometime back. So I just repeat the process quickly show you how to make this board and how to convert it into a utility thing. So tomorrow we will be live at 5 o'clock, not 5:30. That is only for tomorrow. Rest everything is same. And if you so for tomorrow you just need paper, or you can watch it with me. Watch it and make it later on, because it will take 2 days to finish one bowl. It took me 3 days, but you can finish it in 2 days, so it will be easy. And for this you need a bowl or paper, then normal stationery and decorative stuff. But for tomorrow it will be a quick session how to make utility bowl for different stuff. I do crochet and knitting a lot, so I need something to hold my wool and thread. So I'm going to cut it tomorrow and show you how to use it for embroidery or the knitting. If you have any questions, send me messages. Don't worry, I'll reply to all the comments maybe day after tomorrow, because tomorrow I'll be a little busy. So I'll see you tomorrow at 5 o'clock. Bye bye.